चंद्रयान has landed. Very proud of it. इकट्ठा कर लिया और अब न्यू दिल्ली स्टेशन पे प्रोबेबली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतरेंगे। ट्रेन स्टार्ट होती है न्यू दिल्ली से शिवाजी स्टेडियम धौला कुआं रुकते हुए एरो सिटी और फिर T3 जाती है और एंड हो जाती है ट्रेन कुछ ऐसी। अभी हम पहुंच गए एयरपोर्ट के अंदर और चेक इन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 6 घंटे पड़े फ्लाइट में। कई जगह कई प्रोडक्ट्स पे अच्छी डील भी मिल जाती है। एंड अब हम पहुंच गए हैं एयर लाउंज में और उस तरफ खाना लगा हुआ आप देख सकते हैं। सफर का ही था मैं सफर का रहा इधर का ही हूँ ना उधर का रहा सफर का ही था मैं सफर का रहा इधर का ही हूँ ना उधर का रहा सफर का ही था मैं सफर का रहा मैं रहा हम एंटर कर गए अब थाईलैंड का एयरपोर्ट। वीज़ा ऑन अराइवल हो गया है, इमिग्रेशन हो गया है। कुछ नहीं पूछा इमिग्रेशन में, ना वीज़ा ऑन अराइवल में कुछ पूछा। हो गया देना सारे थाईलैंड में। वेलकम टू फुकेत एयरपोर्ट। फुकेत एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। हमारी फ्लाइट का लगेज भी शायद आ गया है। पोलेट इमिग्रेशन हमारा हो गया है। बैगेज क्लियरेंस हम बैग ले रहे हैं अब। वही 2200 पर पर्सन इन्होंने लिया और डेली की भी वीज़ा की थी वो भी ली। दिस इज द स्टेटस सो फार। और आते ही लोग वीज़ा बेच रहे हैं, अपना सिम कार्ड और बैग गिर रहे हैं। सो वन हैज टू बी रियली केयरफुल। क्या हो रहा है? हाय, तो अभी हम बस का एक अटेम्प्ट कर चुके हैं। बस की तरफ गए थे, वहाँ थोड़ा यहाँ से वॉक करके आया तकरीबन 300 मीटर। पूरा थ्रिल मिला हमें। जैसे ही बस में पहुँचे तकरीबन 5 मिनट से डिपार्चर में बस पहले ही गोरों से खचाखच भरी हुई थी। खचाखच मतलब इंजन पे बैठे हैं गोरे और एक सीट नहीं अंदर और बैगेज से लबरेज बस मिली मुझे। अब उसके बाद हम पहुँचे मिनी बस वालों के पास कि भैया तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। वो कहते हैं जी अभी हमारी मिनी बस के लिए मुझे 11 लोग चाहिए। जब 11 लोग मिलेंगे आधे घंटे में तो हम चल पड़ेंगे। मैं कहा बहुत बढ़िया। तो अब ये स्टेटस है, देखते हैं थोड़ी देर और। यहाँ पे एक और दूसरे पॉइंट से मिनी बस चेक कर रहे हैं तो आपको अगला अपडेट भी दे देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। कुछ अपडेट ये है इनका डोमेस्टिक अराइवल, सॉरी इंटरनेशनल अराइवल। और ये छोटी सी पार्किंग है और वो सामने जहाँ डिलन लिखा आप देख पा रहे हैं अगर, तो वो है डोमेस्टिक डिपार्चर और अभी भी ऊपर अराइवल होगा फिर। तो ये है सीन का।
हमने फुकेट में स्मार्ट बस ले लिया। दे चार्ज ओनली 100 Thai baht पर फ्लैट रेट। I'm sorry. He's putting Sholay on for us. They're watching subtitles, I'm saying. Probably. ये हम फुकेट ओल्ड टाउन से जा रहे हैं पटोंग बीच की तरफ। इतना से शायद 15 मिनट तक होटल पहुंच जाए। रेलेवेंट पार्क लवली। For the swimming pools, right? Okay. So you can share this started with. There's a pool bar. So that is for the pool access. Exactly. So the cars are included in that? Yeah. Perfect. And for the breakfast, if you want to get the breakfast, one person is going to be 299 baht. Yeah, well, I think we're good. We'll eat out. We'll explore. Just stay with us. How about bike rental? If I need to rent a bike, can you help me in that? Yes, sir. You can go straight on. You can see the exchange currency book near the exchange book. Okay. They are the best guys around? Everywhere same like Same. likewise, yeah. Flat rate market. Well, what's the per day? Yes, I think 200 between 200 and Basic, like 300. 200 and 300 200, 300. per day. Depending on CC. Yes. Perfect. Thank you very much. 3 bags? They've taken 2. Achha. So till what time is the restaurant open? In the evening? Sorry, Restaurant food? restaurant. Our restaurant open 8 to 11. 8 to 11 p.m. 8 in the morning. Yes. And room service? Room service. 24/7. All day. No. Also 8 to 8 to 11. Hold inside, yeah. Open. हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच गए हैं अपने स्पेशल जर्नी के फर्स्ट पड़ाव में, जो कि है पटोंग बीच, थाईलैंड। तो
As we're approaching our room in this beautiful, beautiful resort, the first thing I noticed is this beautiful blue pool. बहुत ही सुंदर व्यू और एक cottage like resort old Balinese style है. ये थोड़ा modern Balinese style है. It's not really the original, but बहुत ही beautiful anyway. Now walking towards the room, I fell in love with this beautiful shell-shaped lights, very unique. But we expected nothing less. हमने ये होटल बुक किया. Going along, this was the room, and after this very long, tiring and interesting journey, होटल की considerate staff मुझे बहुत अच्छा लगा. इन्होंने बिल्कुल रूम ठंडा करके रखा हुआ है. It felt so good as soon as we opened the door. Right next to the door is this wardrobe with the robes, hangers, safe, hair dryer, and a little shoe rack. All very nicely arranged in wooden colors. Funny. Moving along, this is the refrigerator here, kettle, tea, coffee, water. Let's see. A very clean refrigerator, which we will stop very soon. और यहाँ से इसके बिल्कुल सामने है. Let's see what is here. ये है bathroom, which is small but very cute, with a bathtub and some towels. थाईलैंड में जो एक चीज आप हर जगह नोटिस करोगे वो है ये टॉवल्स का फोल्ड ऑन द फ्लोर. आई डोंट रियली नो व्हाई डू दे डू दिस. हम इसको पता करने की जरूर कोशिश करेंगे, बट या यू विल फाइंड इट एवरीवेयर. और हम बात कर रहे थे होटल की डिटेलिंग पे और यू नो कंसिडरेट स्टाफ पे. इन्होंने यहाँ पे फुल्ली स्टॉक्ड बाथरूम वैनिटी दी हुई है विथ कॉटन पैड्स, टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, soaps, paper, makeup pads, shower caps, everything that you may need, the cotton balls, everything. So they are not iconic just for the sake of it, but they are really experienced. Room में क्या है? It has this very beautiful yellow ambiance lighting, no bright lights, and all wooden furnishings. Very pretty and very homely. And again, the hotel का attention to detail हमें बहुत पसंद आया. यहाँ पे already beach umbrellas हैं, beach umbrellas और pool umbrellas, or for the rain is a multi-purpose umbrellas, and a very cute picnic basket that you can take along with you to the beach. Moving along, इस रूम की खासियत बस ये pool और ये बढ़िया सा Balinese डिजाइन नहीं है, but this is why we booked this for this beautiful Patong beach right through the windows, which we can enjoy with some nice cool drinks from this balcony. ये होटल बस अंदर से नहीं, बाहर से भी इतना ही सुंदर है. विल कंटिन्यू दिस जब हम बाहर जाएंगे इस बीच पे खेलने के लिए, बीच में प्रियांश के साथ पिकनिक बनाने के लिए, तो वहाँ आपको दिखाएंगे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, एंड इट्स नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स एन आइकॉनिक प्रॉपर्टी. यहाँ की बहुत पुराना होटल है ये, एंड विथ अमेजिंग स्माइलिंग स्टाफ, and they're known for the cleanliness. I expected nothing less, but I'm still impressed after looking at this beautiful view from our room. So see you next.
from the pool or the beach with little Priyan. तो हम पहुंच गए बांग्ला स्ट्रीट पे फाइनली, चल के। So now you are in front of the world famous Bangla Street at Patong Beach. So let's now cross. I think we've come a little too early. I don't think, I mean, still a lot of crowd is there. ये लगा तो केड़ी होता है।